Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session. Let's get started with the topic first. Today is 16th of July. The first topic is Supreme Court sent strong message to the government on section 124A, that is sedition. Second, Center releases the draft drone rule 2021. This is a second revised draft rules that has come out by the central government. Third, financial inclusion is a policy priority for the RBI. So RBI is looking for the revival of the economy its best possible way. The second last, Center to amend General Insurance Business Act 1972. And the last is post-pandemic doctors. So this is an editorial from Indian Express. We'll understand the details of all the news and editorial. Apart from this, there would be some MCQs questions. These questions would be based on current affairs that will help you in the upcoming prelims examination. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. That would be a support that you can give to us. Right? Now, coming to the news, that is Supreme Court sent strong messages to government on section 124A, important for your general studies paper 2 in mains paper. Structure, organization and functions of judiciary. Some portions like section 124A and other sedition rule would be important for the prelims examination as well. So what Supreme Court has said, Supreme Court ने भी recently government से पूछा है through Attorney General, because they asked through Attorney General. Attorney General is the official lawyer of the government. So Supreme Court ने Attorney General से पूछा कि why there is a provision, the section of 124 is still running in the country after 75 years of independence, right? Why this is not removed from the IPC? What is a requirement? What is the validity of section 124 still in this contemporary India, in this technology driven India? This is what the Supreme Court has questioned the central government, or you can say they have questioned central government via the Attorney General. Now Supreme Court has expressed alarm rampant. उन्होंने कहा है जिस तरह से कंट्री में सेडिशन एक्ट यूज की जा रही है, मिसयूज की जा रही है जिस तरह से, that is again a cause of concern, and this is not for the first time the Supreme Court has said this. Earlier also many other judges of the Supreme Court has raised several concern and intention about the government with regards to the section 124A. Now the court has questions. जिस तरह से continuous चल रही है 124A, ये colonial provisions थी which was used to jail Mahatma Gandhi, our national leader, and the law book of the modern democracy is still continuing with this, right? So Supreme Court were of the opinion that why can't government abrogate this rule, because this is something that has been misused repeatedly in the coming decades. If you can, in the past 5 years also, it has been massively used. Now, misuse of the law by the authorities, this is what the Chief Justice of India has to say. The Chief Justice of India has categorically said कि जो prima facie it shows that कि authorities जिस तरह से citizen के खिलाफ ये use कर रहे हैं, this is again the violation of fundamental rights and freedom of speech and liberty which is being provided to an individual by the constitution of this country, right? And Supreme Court being the guarantor of fundamental right, it is the duty of the Supreme Court to make it understand and to protect the right that is being provided by the constitutions to the citizen. Now CGI ने एक clear section दिया है जहाँ पे section 124 लेकर के बातें कही गई है, and they have said that as the time passes, why the government has not abrogated this rule, why they have not removed from the IPC, despite सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में भी इसको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी की बात नहीं कही थी, बट देन ऑल्सो this rule was applicable repeatedly, right? And this is why Supreme Court called it this is a misuse. Now the CGI has make it clear कि जो कोर्ट इस तरह के मैटर पे काफ़ी सेंसिटिव है, जुडिशियल रिव्यू की अगर मैटर होती है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनको अगर उन्होंने सेडिशन के चार्जेस लगाए हुए हैं, बेसिकली विच कॉल फॉर द फ्रीडम फॉर फ्री स्पीचेस को कर्ब करने के लिए इस तरह के रूल्स यूज किए जाते हैं. And in India, most of the journalists, like they have been sent to jails, activists, dissenters, they were kept in jail using this
Section 124 of the Sedition, and this has been massively misused by the authorities in the country, and it was being argued that the central government has repeatedly tried to use to curb the voices of the people, especially for the journalists and activists, right? Now, Kedarnath Singh ki guideline hai. There's a specific guideline in the Kedarnath Singh cases. This is very, very important. And mains, it is must. You have to write it, right? अगर आप mains में लिखेंगे तो ये आपको लिखना पड़ेगा. Prelims में, this can again be a factual question, right? So, in a landmark judgment in 1972, Kedarnath Singh cases, Supreme Court ने अपील किया था कि जो constitutional validity of the sedition is attempted to restrict the scope of it misuse, right? Or the court has also held that accompanying the incitement of the court, violence or criticism of the government cannot be labeled as the sedition. So this is what the judgment already was by the Supreme Court in 1962, but still the validation of that rule is applicable, and this is a strange that Supreme Court has raised several concerns, right? If you go by the definition of section IPC is section that is 124A of the IPC. I'm not reading the entire content because many a time you must have be aware of section 124 है, तो उसमें कहा गया है कि जितने कोई भी इंडिविजुअल अगर वर्ड्स स्पोकन रिटन सिग्नल इस तरह से किसी भी तरह से रिप्रेजेंटेशन करती है, दैट इज अगेन द नेशनल थ्रेट, दैट इंडिविजुअल कैन बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द रूल ऑफ सेक्शन 124 ऑफ द सेडिशंस, राइट? बट इन केदारनाथ सिंह केसेस it has been categorically said that it cannot be labeled. जहाँ पे अगर किसी चीज को किसी वॉइस दी जा रही है, अगर someone is protesting, you cannot simply go with the sedition charges, right? बहुत सारे cases recently हुए हैं, and even in the cases like famous journalist हैं विनोद दुआ, उनके केस में भी जस्टिस यू ललित ने कहा था, उन्होंने उनके जो केसेस थे सेडिशंस की उसको क्वैश किया सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे मिनिस्टर दुआ हैज क्रिटिसाइज प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स गवर्नमेंट ऑन द यूट्यूब टेलीकास्ट, HW करके न्यूज़ आती है, उसमें उन्होंने इस चीज़ को बातों को रखा था. सो दैट वाज अगेन द FIR वाज रेंज्ड इन द हिमाचल प्रदेश एंड ही वाज बीइंग हैरेस्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट? सो यू ललित इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैज फाइनली क्वेश्चन्ड हिज केसेस. नाउ कुछ लाउड डिफाइन करने की बात की गई है. फर्स्ट इज D.Y. Chandrachud, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, he has said that this is a time to define sedition. What actually sedition means, right? Simply criticizing government cannot be a sedition because criticizing is a fundamental right of an individual where it is empowered to criticize the government. और उनको power दी गई है. Now the judges have flag of indiscriminate use. यहाँ पे seditions की अगर बात करें, grievances of government, खास करके कोविड मैनेजमेंट में बहुत सारी लेवल पे गवर्नमेंट फेल रही है, इवन प्रोवाइडिंग इन ड्रग्स, ऑक्सीजन मैनेजमेंट, एवरीथिंग हैव फेल्ड. सो इफ समवन हु क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, द authorities cannot charge him with the sedition of section 124, right? And I have told you about the UU Lalit judgment where they have quashed the cases for Mr. Duha. Now the court has also upheld this is a right time for the journalist. ये एक जर्नलिस्ट के राइट होती है कि वो ब्रूटली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द गवर्नेंस एंड द सर्विसेज दैट दे आर बीइंग अवेल्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? सो दीज स्टेटमेंट, दिस एग्जाम्पल्स वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हेन यू आर राइटिंग दिस इन द मेंस पेपर. Now the other news that is center released the draft drone rules 2021. This is important for your general studies paper 2 in the mains. Government policies and intervention for the development of various sectors. So what is the rule? How changes has been made? Recently, the Ministry of Civil Aviation, they have released the draft drone rule 2021 और इससे पहले भी ड्राफ्ट रूल रिलीज की गई थी मार्च में. अभी जो नई ड्राफ्ट रूल आई है उसको पब्लिक कंसल्टेशंस के लिए वाइट पेपर रिलीज की गई है. Now government would be changing some important components of it, right? So let's understand what were the changes that has been proposed. So rationale की अगर बात करें, why government did so, why it was already this year only in the March that government has come up with a rule. Now why they are changing this, why they are making some amendment. So first government ये opinion में है कि जो जितनी simplified drone rule होगी that is required in India and will abolish the need for the large number of approvals. जितने भी approvals हैं उसमें खास करके रेड टेपिज्म को कम करने की कोशिश की जा रही है.
and to provide impetus in the research and development in the country, right? So government want कि जो NOC है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, so because of the reason they are liberalizing the process and this intent to make the rule यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है, जहाँ पे ड्रोन रिसर्च और एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा मिलेगा, एंड दिस वुड गिव अनदर स्टेप ऑफ डेवलपिंग एंड रियलाइजिंग द विजन ऑफ इंडिया एज अ ड्रोन हब. So this is a one aspects of the rationale that government has provided. Now what is the advantages of drone? अगर बात करें ड्रोन सर्विसेज में वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा ये established है. Now if you talk about India, drones are bringing the next big tech revolution around the globe, और इसकी में जो reduced cost हैं, even the resources time taken are very less. Now it is upon the government to ride जो नई वेव है उसको किस तरह से फैसिलिटेट करना है, एंड इवन ड्यूरिंग द कोविड दीज ड्रोन कुड हेल्प अ लॉट, राइट? अगर आप मेडिसिन डिलीवरी की बात करें तो ड्रोन से भी मेडिसिन डिलीवरी की जा सकती है. सो ऑलरेडी इन मेनी फॉरेन कंट्रीज लाइक pizzas and other stuffs are being delivered using the drone. So the number of forms to be filled to seek authorizations before operating a drone has been reduced from 25 to 6, right? So if you want to go for an NOC, if you're a servicer where you provide drone services in India, तो आपको उसके लिए 25 NOC से जाना होता था. Now that has been reduced to only 6, right? To especially improve the quality and the number of drone that is operating in India should be increased. Now कुछ mandatory permission requirement अभी भी continued है. So most drone would require a unique identification number. These are the mandatory provision that the drone partners or the drone service provider has to go with, right? Certification of airworthiness and remote pilot license for person controlling the drone and prior permissions, right? So these are the three main important mandatory provision that is still required as of now. Now no such approval would require drone to use research and development. अगर research development education institutions की बात करें, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, यूटीज़ की हो, यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन और इंडस्ट्रीज ट्रेड इन सारी चीज़ों को देख रही है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिकली अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड हैविंग गुड एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर, सो they would only have the GST ID number that would be required, and they could further, in academic institutions, they can continue with the research activities. Now, encouraging indigenous manufacturing. So, what government is trying to incorporate with this decision, basically, जो आत्मनिर्भर स्कीम है गवर्नमेंट की, जो एक पूरी टैगलाइन है वो उसमें इनकॉर्पोरेट करने की बात की गई है टू प्रमोट इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग इन द ड्रोन, और जितने इंपोर्ट्स हैं उनको कम किया जा सके, राइट? सो दीज इंपोर्ट पार्ट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन द कंट्री. मोरओवर यूनियन गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि जो एक स्टैंडर्ड है फॉर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेशन ऑफ एयरवर्दीनेस दैट विल प्रमोट द यूज ऑफ मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजीज. किस तरह से मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी की यूज़ की गई है, कितने कंपोनेंट्स हैं ड्रोन के जो कि रीजनल है, और उसके साथ के साथ जो इंडिया की रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसको नाविक भी कहते हैं, उसके साथ उसको लिंक होना भी ज़रूरी होगा, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू टू हेल्प the Indianization of manufacturing of the drones in the country. Now history of drone regulations की अगर बात करें, so DGCA है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने एक ब्लैंकेट लगाया था ड्रोन पे, बैन लगाया था 2014 में. Now this ban was lifted in 2018, right? So the regulator has issued civil aviation requirement to regulate the use of drone, right? After that, before to get an approval, you need to go with the 26 approval. Now this has been reduced to 6, right? So these guidelines stipulate that the unique number identification would be required for the drone except in one cases. So कुछ cases में exemptions थी, but ज़्यादातर cases में यह requirement mandatory थी. Globally, unmanned aerial vehicles की अगर बात करें, they are used for variety of purposes using drone photography, delivery of small products and monitoring of the forest, right? And India की अगर बात करें, monitoring of forest is something which is very crucial. So if you're being asked in general studies paper 4, अगर आप case studies के पेपर में आपसे पूछा जाए कुछ ऐसे solutions forest fires को लेकर के या agriculture activities को improve करने के लिए, so आप इस तरह के modern technology के examples भी लिख सकते हैं. Now, financial inclusion is a policy priority for Reserve Bank of India. This is important for your general studies paper 3.
inclusive growth and issues arising from it. सो रिजर्व बैंक की गवर्नमेंट ने रिसर्च नहीं कहा है कि फिनेंशियल इंक्लूजन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है आरबीआई की पॉलिसी प्रायोरिटी में, जहाँ पे सेंट्रल बैंक ये कोशिश कर रही है कि पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटेबल और सस्टेनेबल मैनर में इकोनॉमी को ग्रोथ करे, राइट. So the RBI governor, Mr. Shantikant Das was basically he was talking to the Financial Economic Times in the Financial Inclusion Summits. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात की गई है फॉर द माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एक कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट रेगुलेट की बेसिकली रेगुलेटरी मेजर्स के लिए गवर्नमेंट ने लाया था, जिसमें रेगुलेटरी लेंडर्स और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कही गई है, हाउ दे कैन बी रेगुलेटेड, राइट. जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस तरह के माइक्रो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क की इज टू कंसर्न रिगार्डिंग द ओवर इंडेप्टनेस ऑफ माइक्रो फाइनेंशियल बोरोवर्स, इनेबल मार्केट मैकेनिज्म टू रैशनलाइज इंटरेस्ट रेट और empower करे borrowers को to be informed decision by enhancing transparency and loan pricing, right. So these are the three main components that government consider while they think of a framework for the microfinancial institutions, right. And these 3 points are again important. अगर आप मेंस में भी लिखेंगे तो you have to write these points. फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई है. आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर दैट वी हैव टू कम अप विद द फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग क्रेडिट एंड अदर सेफ्टी नेट्स, राइट. और ये सारी चीज़ें बॉटम ऑफ पिरामिड में अवेलेबल होनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर द अर्बन एरिया बट ऑल्सो फॉर द रूरल एरिया, देन ग्रेजुअली मूविंग टू द सब अर्बन एरिया एंड द अर्बन एरियाज, राइट. And definitely these require a lesson from the past experiences of the COVID-19, जहाँ पे financial inclusion और inclusive growth को reinforce करने की बात की गई है with the financial stability. और greater financial literacy की बात करें, the RBI has come up with enabling the bank and NBFC and the microfinancial institutions to enhance the customer base. जो customer base है उनकी जो understanding है, जितने भी hidden charges है ना, they cannot be subject to any fraud. So more and more financial literacy should be there, and products and diversification of their balance sheet should be also made clear to the public and even to the और RBI जो रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, उनके पास भी बैलेंस शीट क्लियर ऑलरेडी वो सबमिट करते हैं. बट अगेन टू मेक इट मोर क्लियर फाइनेंशियल लिटरेसी दे शुड इनकॉर्पोरेट सच थिंग वेयर द कस्टमर इज बेनिफिटेड मोर. ना डिजिटल एडॉप्टेशंस की बात की गई है, जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी में रैपिड एडॉप्टेशंस हुई हैं डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के. इवन द प्रीपेड पेमेंट्स की अगर आप बात करो, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैव इंक्रीज. If you see the number is 53% from basically 41 crore in May. Now it has rose up to 226 crore rupees in May 2021, right. So from 2017 to 2021 you can see the number of increase, and even post COVID many people have started using UPI. They scan, they either use Google Pay, Phone Pay. There are multiple payment gateway which is there. So these has drastically increased in India. एंड ये इंडिकेट करती है कि जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज इंक्रीजिंग विद द स्मॉल वैल्यू पेमेंट ऑल्सो. पेमेंट सिस्टम की अगर बात करें, अगर प्रोसेसेस की बात करें, 15 करोड़ ट्रांजेक्शन इज ऑलमोस्ट देयर एंड 4.5 लाख करोड़ इज बीइंग प्रोसेस पर डे, राइट. दिस इज द कैपेसिटी दैट इज बीइंग शोन इन द इंडियन इकोनॉमी. एंड यूपीआई प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, इसको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है बिकॉज मेनी पीपल आर ऑप्टिंग इन दिस mode of payment. This is easy, this is there in the smartphone, you can directly link your account and you can make the payment. So this is hassle free, this is user friendly. Because of the reason this has revolutionized the payment landscape in India, right. And the level of basically if you talk about the ranking, India world में second rank पे आती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा digital payment को use किया जा सकता है, right, for the smallest amount also. Now, Center to amend General Insurance Bill Act 1972, important for your general studies paper 2. Government policies and intervention for the development of various sectors. Now, some changes that has been brought in the Insurance Business Act, we'll understand that. And this is also very important for the prelims examination where 2 statement question can be asked. Finance Ministry ने एक नई bill introduce करने की बात कही है in the upcoming monsoon session, right, which is starting from Monday. This month only, and they would be changing the General Insurance Business Nationalization Act 1972, right. So center ने set किया है disinvestment target को, where they would be disinvesting
1.75 lakh crore rupees to high lower than 2.1 lakh crore which was anticipated. Now disinvestment कहाँ होंगी मैं आपको आगे बताऊंगा. So amendment की अगर बात करें, what are the amendment that government is trying to bring with these rule? So government is moving to amend one main insurance to facilitate privatization. जो state owned business है उनको insurance companies में incorporate की जाएगी. This was already declared in the union budget, right? So I have already discussed this in our union budget series. If you have not watched that, do check it out. Our playlist section on the YouTube, you will get that video, right? And the bill aims to increase the FDI जो foreign direct investment है उसको increase करने की बात की जा रही है from 49% to 74%. This was also announced in the union budget, right? And the center has set that disinvestment target 1.75 lakh crore lower than 2.5 lakh which was anticipated. Privatization of general insurance company की बात की गई है and 2 state owned bank. One key reform proposal would be there in this budget. Now, talking about the privatization of public insurance companies, India में कुछ important companies हैं public insurance company that include National India Insurance, United India Insurance, National Insurance Company, Oriental Insurance Companies, right? So government is intended to privatize. Accordingly, some shares share किए जाएंगे private company के साथ. तो finance minister ने कहा they will choose the company after the consultation with नीति आयोग. So नीति आयोग की expert member committee बनाई गई है. उनके ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज कोर जो सेक्रेटरीज हैं डिसइन्वेस्टमेंट दे वुड डिसाइड कि किस कंपनीज में कितनी डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करनी है, राइट? सो दैट इज स्टिल नॉट क्लियर एज ऑफ नाउ. नाउ गवर्नमेंट हैज आल्सो ओन द रीइंश्योरेंस ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी. और जनरल इंश्योरेंस की बात करें बिजनेस इन इंडिया दैट वाज नेशनलाइज्ड इन 1972, राइट? सो दिस इज नॉट वेरी ओल्ड. गवर्नमेंट की अगर बात करें, गवर्नमेंट टुक ओवर शेयर ऑफ 55% ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज अंडरटेकिंग 52 इशुएंस ऑफ द जनरल इंश्योरेंस बिजनेसेस इन द कंट्री. एंड डेफिनेटली जब एफडीआई को इंक्रीज की गई है, मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिवनेस पिक्चर्स वुड बी देयर इन इंडिया एंड अल्टीमेटली उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ के कस्टमर्स को ही मिल पाएंगे. Now the last news, that is the post-pandemic doctor. This is an editorial from Indian Express. This is important for your general studies paper 2, issues related to development and management of health. Now, what are the topics that I'm going to discuss under this editorial? So there are 4 important topics that has been discussed by the editor. This talks about the background, training to doctors, telemedicine and its advantages, and way forward, right? So this is being written by K. Shrikant Reddy. He's a cardiologist and epidemiologist. He's a public health foundations and उन्होंने अपने views personal रखे हैं. And talking about the theme of this editorial, it talks about how the post-COVID doctor must respond. What should be the behavior that they should inculcate so that if any future pandemic occurs or we are on the recovery phase, what are the gestures that should be coming from the doctors community. Now let's understand this editorial. यहाँ पे बात की गई है जो COVID-19 है उसने एक तरह से कैटालिटिक स्पार्क का काम किया था इन थ्रोइंग लाइट ऑफ मेनी एरियाज जहाँ पे इंडिया में जो मेडिकल एजुकेशन थी, जो मेडिकल एजुकेशन की स्टेटस थी, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेटस. सो व्हाट वाज द स्टेटस दैट कम टू अस? नो, वी हैव सीन दैट द bottlenecks was there. So that has act as a torching light in our overall healthcare system. Now, integrated functions की अगर बात करें ह्यूमन बॉडी की, ये इंटरकनेक्टेड है. लाइफ फॉर्म, नेचुरल इन्वायरमेंट, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. आप एक बार मैंने आपको पहले न्यूज़ पे डिस्कस किया था जहाँ पे ये इन्वायरमेंट और ह्यूमन के बीच जब तक जूनोटिक डिजीजेस की बात काफ़ी ज़्यादा कही गई है, इफ विल मोर इंटरवीन इन एनवायरमेंट दीज टाइप ऑफ जूनोटिक डिजीजेस वुड मोर कमिंग टू द बेसिकली टू द मैनकाइंड. सो ये बात कही गई है कि ज़्यादा इंटरफेरेंस भी हमें नहीं करनी, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है इन्वायरमेंट के साथ, राइट? सो मेडिकल एजुकेशन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. इफ यू टॉक अबाउट इंडियन मेडिकल कॉलेजेस, यूजुअली अगर एक अर्बन एम्बियंस की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इज डेफिनेटली डूइंग बेटर, बट मोस्ट ऑफ द semi urban or rural areas are disconnected with the facilities of multi-care healthcare system in the country. The government has already allocated some specific amount to the healthcare infrastructure, but definitely we have to set a target and accordingly we have to work upon that. Now, training to doctors की बात की गई, जो नए डॉक्टर्स हैं, इवन जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हैं, उनकी एबिलिटी टू जज अ न्यू साइंटिफिक एविडेंस, किस तरह से जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हैं, तो डॉक्टर नीड टू बी ट्रेंड इन सच अ मैनर दैट दे कैन हेल्प द
patients, and they can help the mankind to predict what future pandemic could be like and how precautions can be taken, right? So जो medical education है, that must teach the essential principle of epidemiology. Epidemiology is the branch of science which deals with the study of infection and transmissions, right? तो उसके statics जो खास करके अभी भी कोविड-19 में जितने भी स्टैटिक्स लिए जा रहे हैं, जो डेटा कलेक्शन हो रही है, वो बाद में भी स्टडी में मदद करेगी, राइट? सो ड्यूरिंग द RT-PCR test, we have seen the tests were not adequate, the numbers were not adequate, and the test was failing. Then again, we have the CT test. Again, this was also failing. So there was some contradiction which was there with the virus. And because of the reason, the things which have worsened during the second COVID wave, these reasons were among them also, right? Now, telemedicine की एक बहुत बड़ी advantages देखी गई है during the second COVID wave. Even the first COVID wave, we have seen that this has emerged as a bridge to the clinical care during the period of restriction mobility, जहाँ पे individual को घर से निकलने की सुविधा नहीं है, ऐसे एज ग्रुप के लोग जो बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए टेलीमेडिसिन एक बहुत ही बड़ी एडवांटेजेस है, राइट? एंड टेलीमेडिसिन पे डायरेक्टली एक मेंस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो मेक श्योर यू आर थॉरो विद द कॉन्सेप्ट, राइट? नाउ यहाँ पे पेंडेमिक पे बात की गई, जो कंसल्टेशन है टेलीमेडिसिन पे, उसको स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है हेल्थ केयर सिस्टम्स पे. एंड इन मेडिकल एजुकेशन इट इज़ एसेंशियल कि जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो स्किल ज़रूरत है टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन को, उसमें हमें इफेक्टिव और सेफ करने की ज़रूरत है, राइट? बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको ज़्यादा प्रमोट किया है. इवन दे आर यूजिंग मेडिकल एजुकेशंस, जो मेडिकल स्टूडेंट है या फिर उनके कोर्सेज में इस तरह के टेलीमेडिसिन को भी यूज़ किया गया है ताकि वो एक सोशल स्किलिंग को भी डेवलप कर सके, राइट? हाउएवर अगर टेलीमेडिसिन की बात करें, दिस रिक्वायर मेडिकल स्टूडेंट्स टू बी ट्रेन्ड एफिशिएंटली. एक इवैक्यूएट पेशेंट्स जो डेटा है उसके बारे में जानकारी होना काफ़ी अहम है. दे शुड बी कॉम्पिटेंट विद द मैनेजमेंट डिसीजन, राइट? How to manage, how to talk to patients, how to give them empathy while you talk. So these are the things which is very important for the telemedicines. Now telemedicine may involve engagement with the patients, attendant and the primary care team member, right? In India, during the COVID second wave, telemedicine has definitely helped a lot. और इसके जो numbers पहले 50,000 हुआ करते थे, this has increased to 5 lakh in this second COVID wave, right? Now, way forward that you can conclude in the paper. So you can write that COVID should catalyze the change in medical educations. जिस तरह से चीज़ों की हमें पता चली है epidemiology को लेकर के, और all other preventive measures that need to be taken. तो orientation ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे sensibility के साथ compassion को corporate किया जा सके. And ultimately the aim is to have a good health for the masses and to make the people aware how they can self-care it. The pandemic has re-emphasized for the time honored scientific perceptions, perspectives और जो moral values है medical professions में, उनको बहुत ज़्यादा highlight की. And the need to impart skill, effective public communication is very important. Empathic conversation, as I told you, telemedicine में empathetic होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है with the patients during the pandemic. And increasing the doctors that call upon the clarify medical concepts, research finding to media layout. So public is something people, the patients, they have to get ultimately benefit from the medical science, and that can only come when we have a technology upgradation, when we have a better understanding with the patient's behavior, then we can utilize that to get the final results, right? So these are the way forward that you can conclude in the mains answers. Now moving to the MCQ questions of the day. Basically before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For the first question, the correct option is C. For the second question, the correct option is A. So do check it out. What answer you have marked in the answers in the YouTube comment sections. Now today's question, Mission Vatshalya. The mission is aimed to reduce the infant mortality. Under the mission, the National Human Milk Bank and Lactation Centers would be established. So if you have read this mission, do let me know in the comment section. And many of you are not participating, right? Do you want me to continue with the question answer series? I'm making this question just to help you to get a right questions. Even if you get 2 or 3 questions correct with our help, that would be of great help to you. Even the cutoff people lack with 1 question or 2 questions. So make sure you participate. You have any suggestions with the questions, you can share that in the comment section down below. We'll be definitely coping with your suggestions.
Now डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में आपको बताना है. प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल. इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम post Kargil war. So if you know the correct answer, do let me know in the comment sections, and also share your suggestions in the comment section. This was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.